Okay, now in this problem we have a particle which is this cabinet having a weight of 20 pounds, and this cabinet is subjected to a force of F equal to 3 plus 2t pounds, यानी एक variable force act कर रही है इस cabinet पे up that incline as shown to you in the figure. If this cabinet is initially moving down the plane with a velocity of 6 feet per second. So condition क्या given है आपको कि initially the cabinet was moving down this inclined plane at a speed of 6 feet per second. You need to determine how long it will take the force to bring the cabinet to rest. So the cabinet was traveling down the incline. You applied this force on the cabinet, which is being applied up the incline along the incline axis. This force has a variable magnitude of 3 plus 2t. It means that with the passage of time, the magnitude of the force is going to increase. You need to find out how long will it take for this force to bring the cabinet to rest. F always acts parallel to the inclined plane. Neglect the size of the rollers. Okay, now since rollers are being placed here, so rollers अगर यहाँ लगे हुए हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई force हमने neglect करनी है rollers की वजह से? Yes sir, friction. Yes sir, friction. So once these rollers are being placed on this particle, it means that we don't need to consider the word or we doesn't need to consider the force of friction in this particular problem. अगर roller ना लगे होते, ये cabinet skid कर रहा होता इस inclined plane पे और smooth का word इस्तेमाल ना हुआ होता, coefficient of friction given होता तो आप force of friction जो है वो इस्तेमाल कर सकते थे. But because of these rollers, you are not going to include the friction force in your problem. So starting first of all drawing the free body diagram of this particle, the weight of this cabinet would be acting in the downward direction. Then you have a normal force, which is this normal force NC, that would be acting normal to the contacting surface. Then you have an applied force, which is a variable magnitude force having a magnitude of F equal to 3 plus 2t, which is acting along the incline up that incline. So these are the three forces which are acting. We need to apply the relevant principle, and we need to define the axis first of all. So we are taking the incline axis to be our major axis, x-axis, and y-axis being defined perpendicular to the inclined surface. So these are the two axes which we are going to use in this particular problem. Okay, now in order to solve this problem, let us start with the principle of impulse and momentum. So applying the principle of impulse and momentum along the x-axis, taking positive x downward. Sorry, मैंने यहाँ axis का जो direction draw की है वो थोड़ा सा गलत कर दिया. I am basically taking positive x-axis down the incline rather than up the incline. So positive x-axis being defined down the incline, and positive y is being defined perpendicular to the inclined plane in the upward direction. Okay, the principle of impulse and momentum states that the initial momentum of this cabinet, which is being defined as mvx1 plus sum of all the impulses which are acting along on this cabinet along the x-axis during time interval t1 to t2 should be equal to the final momentum of this cabinet along the x-axis. So this is the principle of impulse and momentum which is being applied on this particle along the x-axis. The principle says that the initial momentum of this cabinet along the x-axis plus sum of all the impulses that are acting on the cabinet along the x-axis should be equal to the final momentum of this cabinet along the x-axis. Okay, starting with the initial momentum term first of all, कि ये जो हमारा initial momentum है, सबसे पहली बात, is it going to be a positive quantity or a negative quantity? Positive. Since initially the cabinet was moving down this incline with a speed of 6 feet per second, so since the cabinet was moving down the incline, तो down the incline हमारी कौन सी axis define हुई है, positive x या negative x? Positive x. Negative. Positive x define हुई है down the incline, so that's why this cabinet has an initial momentum along the positive axis. So mass इसका कितना हो जाएगा? It is going to be 20 over 32.2, which is the mass of this cabinet. So आपके पास mass जो है वो 20 over 32.2 हो जाएगा.
मैथ्स में यहाँ लिख नहीं रहा, मैं उसको सिंपली m के तौर पे डिफाइन करता हूँ. एंड द वेलोसिटी वाज गिवन टू यू एज 6 यूनिट्स एंड सिंस इट वाज ट्रेवलिंग डाउन द इंक्लाइन व्हिच इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो इट्स मोमेंटम वुड बी पॉजिटिव. आप पॉजिटिव साइन ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पॉजिटिव साइन डाल दिए. व्हाट शुड बी द फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस कैबिनेट? जीरो. Since you need to find out कि इस फोर्स को अप्लाई करने के कितनी देर बाद दिस कैबिनेट कम्स टू रेस्ट, so once this cabinet comes to rest, the final momentum of this cabinet would be equal to 0. Okay, now coming to the center terms which involve impulses, what are the impulses that would be, what are the forces that would be creating impulse along the x-axis from the free body diagram? Can you identify those forces which would create impulse along the x-axis? Yes, sir. Weight W One- and force F. Okay, one is the weight of this cabinet which would be creating impulse along the x-axis. What should be the value of that impulse? It is going to be the force multiplied by time. So W into T is going to be that impulse. कोई साइन कॉस भी हम ऐड करेंगे? Yes, sir. कौन सा कंपोनेंट होगा W का? सर ये होगा sin 20. It is going to be sine of 20. So W sine 20 into T is going to be the impulse. Basically, आप अगर W के components consider करें तो this angle is 20 degrees. So W cos 20 is along the y-axis. W sine 20 is along the x-axis. Positive, negative impulse क्या create करेगा ये? सर ये पॉजिटिव करेगा. So Yes, since sir. this component would be acting towards the positive x-axis, which is down the incline, so it would be creating a positive impulse. So that's why we have put a positive sign here. Okay, any other force that would create a impulse along x-axis from the free body diagram? यस सर, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए. So the applied force, which is equal to 3 plus 2t, and since it is a variable force, so its impulse is going to be determined using integration from t1 to t2. t1 अगर मैं कहूँ 0 है मेरे पास और t2 मेरे पास t है, तो ये 0 से t के दरमियान 3 plus 2t को मैं इंटीग्रेट करूंगा. I am going to get the impulse. This force would be creating a positive impulse or a negative impulse? सर नेगेटिव इम्पल्स. So since it is acting towards the negative x-axis, that is up that incline, so that's why it will be creating a negative impulse. So this is going to be the principle of impulse and momentum, which says that the initial momentum of this cabinet, which is this term 6m, plus sum of all the impulses that are acting on this cabinet during time interval t1 to t2. उसमें दो forces हमने देखी. One is the weight, which would create a positive impulse. The other one is the applied force, which would be creating a negative impulse, is equal to the final momentum of this cabinet along the x-axis. So final momentum के लिए हमने जिस तरह बात की कि हमें वो उस force का magnitude वो find करना है जिस time पे जाके ये इस cabinet को rest पे ले आए. So the final momentum is going to be 0. Okay, what is the unknown in this particular case? सर टाइम टी जो अप्लाइड फोर्स के साथ लगा. टाइम t is unknown. So जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 3 plus 2t, तो ये आपके पास 3t plus 2t square by 3 आ जाएगा और उसको फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे और फाइनली आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब आप इसको इंटीग्रेट करके और इस टर्म को लेकर आएंगे. सो इट वुड बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट मींस दैट टू रूट्स आर गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर केस. So solving this equation, you will get two roots. One would be positive, probably the other one would be negative. So you are going to choose the positive root, which is t equal to 4.64 seconds. So this is going to be the time जिस पे जाके जब ये force आप apply कर रहे हैं तो ये cabinet जो है it is going to be at rest. Is it clear to all of you? यस Yes, sir. Okay. So can you solve this problem using the equation of motion as well? Yes, sir. जिस यस तरह कल हमने डिस्कस की थी, कैन वी सॉल्व इट यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन एज वेल? Yes, और sir. अगर कर सकते हैं तो कैसे? इसमें वही x कंपोनेंट के लॉन्ग पहले तो समेशन ऑफ fx करेंगे. तो अगर हम समेशन fx इक्वल टू max करने चले, इसी बहाने आपका ये वाला टॉपिक रिवाइज हो रहा है आज, जिसमें से आज क्विज भी होने हैं. सो समेशन fx इक्वल टू max कर लेंगे. सो आपके पास जो फोर्सेस x डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं
वो वेट का कंपोनेंट है और ये अप्लाइड फोर्स है। इससे आपको क्या मिल जाएगा? आपको मसलन फॉर एग्जांपल आप डाउनवर्ड एक्स डिफाइन करते हैं तो आपके पास W sin 20 माइनस 3 प्लस 2t इक्वल टू ma, ऐसे ही है। यस यस सर। ओके, सो इट मींस कि आपको यहाँ से क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन एंड टाइम, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यस टाइम मिल जाएगी। सो एक्सेलरेशन आपको मिल गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या करेंगे इसके साथ? इसमें सर हमें इसको डेटा इंटीग्रेट करके फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे उसकी। क्या इक्वेशन कौन सी अप्लाई करेंगे? a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड दैट a ये इज बेसिकली dt होता है dv ओवर dt होता है। सो आप Yes. dv इक्वल टू ft dt करके दोनों साइड्स को Yes, sir. इंटीग्रेट कर लेंगे विद इन द लिमिट्स, ठीक है? तो उससे आपको यही टाइम मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यस यस सर। तो वही बात है कि आपको जनरली काइनेमेटिक्स के जितने भी प्रॉब्लम्स गिवन होते हैं ना, आपके पास चॉइस होती है कि आप तीनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकें। लेकिन देखिए यहाँ इम्पल्स एंड मोमेंटम ने आपको सिंगल स्टेप में सोल्यूशन दिया है। यहाँ पहले आप स्टेप करके एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करते, फिर काइनेमेटिक्स इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो उसको इंटीग्रेट करते हुए 2 स्टेप्स में सोल्यूशन मिलना था। अगेन, क्या आप इस पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे या वर्क एनर्जी करेंगे? सबसे पहली बात तो ये सर वर्किंग एनर्जी करेंगे। वर्क एनर्जी करेंगे। व्हाई नॉट कंजर्वेशन? तो इसमें अनबैलेंस इसमें वो अप्लाइड फोर्स इन्वॉल्व है तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। Yeah, so since applied force is being involved here, which is a non-conservative force, so that's why we cannot apply the conservation of energy principle on this problem. Therefore, work energy principle मैं apply करूँगा। Okay, work energy principle अगर मैं करता हूँ तो work energy principle कहते हैं T1 plus summation 1 to 2 U equal to T2। चले T2 तो 0 हो गया, T1 आपके पास half mv square हो गया। Summation U 1 to 2 वाली टर्म्स में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी? कोई अंदाजा है आपको? वर्क डन ड्यू टू वेट आ जाएगा, और क्या आएगा? वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स आ जाएगी। ओके, चलें, वेट की वजह से वर्क डन तो फाइंड कर सकते हैं आप। उसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए होगी। डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगी। इवन वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स भी फाइंड करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगी, ऐसा ही है। वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगी? उसके सर लिए वो जो पहले फंक्शन बनाया था उसी को दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे। 20 स्क्वायर लगाना पड़ेगा। प्रोबेबली आपके पास दोबारा जैसे a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, आपने dv ओवर dt फाइंड किया था, इसी को आप दोबारा इंटीग्रेट करके ds बाई dt कर लें तो कहानी और लंबी हो जाएगी। सॉल्व हो जाएगा फिर भी, लेकिन प्रोबेबली आपको 3 या 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एनी ऑफ दीज काइनेटिक मेथड्स, लेकिन आपने अपनी जजमेंट को देखते हुए बेस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड जो है वो किसी भी प्रॉब्लम पे अप्लाई करना होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?